Okay, so good morning, everyone. I am Shreya Kapse from Autism Connect organization. Today, on occasion of World Autism Awareness Day, here is a special musical event by Devansh Chandra and Sweta Prasad on board with us. So, before starting with this amazing event, I would like to give a small description about our upcoming conference, that is ICANN, which is International Conference for Autism and Neurodevelopmental Disorder, which is held in Dubai on 28th, 29th, and 30th of April. Coming about the ICANN, it is the pre-conference workshop will be held on 28th of April at JW Marcus Hotel, Dubai. Along with we have some key points I would like to read for you. Temple Grandin will be our keynote speaker for this. This is a special opportunity for parents to connect with medical professionals dealing with autism and speak to them on one-on-one basis. We have more than 60 speakers and 400 to 600 attendees from all over the globe. ICANN workshop will provide a unique platform for parents and professionals for scientific discussion and interactive meeting. In ICANN, we'll be providing CME points also, and the certificates will be given to speakers and attendees. Now, who all can attend the conference? Autism parents, caregivers, therapists, teachers, students, or any other professionals associated with autism are highly invited. It will be a grand platform for communication, interaction, and information sharing with reputed experts from across the world, and to enhance your knowledge to the next level. ICANN is intended to facilitate the exchange of ideas and clinical results between professionals and parents to better the care on the people on the autism spectrum. So, coming up with this event, I would like to give a small description about Devansh Chandra. He's a 17-year-old singer and is the first person on the autism spectrum who performed for TEDx at the age of 15 years. Mahadevi Verma Saman Indian Bestie Awards, International Maitri Award, and many more. He also won many singing competitions without having a formal training. He also performed 3 times for Embassy to entertain international guests for Embassy, and 2 times facilitated by AIMS for his soulful singing. He also ranked in top 50 in Sangeet Junior out of 10,000 participants and certified by Mahaguru Hariharan Ji. He is getting recognized, received from 1.5 years of music training from distinguished duo Anand Milan Ji. Along with I'll also give a small description about Sweta Prasad. She's a behavior therapist, special educator, counselor, and a spiritual healer. So I request Devansh Chandra and Sweta ma'am to start with the session. Thank you, Shreya, for such a lovely introduction. And thank you, Autism Connect, for giving the platform to create awareness and little more about how to go along with the autism that we are having these days in the world. The number of children are really getting increased day by day. So we'll start with Devan's performance first, and then we'll go with the song. Okay, so here is Devans. Devans is my son. He's 17 years old. So we are going to start with a song. Okay, so here we go. जीना 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 रे गुड़ा गुड़ा आई तेरी चूनरिया लहराए जीना 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 रे गुड़ा गुड़ा आई तेरी चूनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का कोई तेरी चूनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवार कोई तेरी चूनरिया लहराए
जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ मैं। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मैं। मायरे मायरे दिल में तो भूला रहा मायरे मायरे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे पूरा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए थैंक यू Yeah, so It was an amazing event, ma'am. thank you. So here are some questions I would like to ask you as a Yeah. parent. What kind of difficulties as a parent you faced? There were a lot of difficulties still I'm facing, and पहले भी काफी सारे थे. Like when we came to know that he is having autism, so at that time we were like, okay, what is autism? It's like एक अंधेरे कुएं में हाथ पैर मारना, किसी चीज के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आइडिया, because at that time उतनी awareness नहीं थी, और the doctor we were consulted, उनको भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि autism क्या है. तो काफी सारी डिफिकल्टी आई कि हाउ टू गो along, because physically he was fit and fine, there is no any abnormalities, all the physical milestones are normal, and if something is like happened in the brain, it's difficult to understand and know what kind of things are there, what kind of मतलब how to approach and किस तरह से इन सब चीजों को डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है. लाइक वी वर स्टक इन अ डायलेमा कि करना क्या है. सो वी स्टार्टेड कि क्या कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है. एट दैट टाइम इंटरनेट का भी इतना ये नहीं था जैसे आजकल गूगल पे यू कैन सर्च एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज ऑटिज्म एंड हाउ वी कैन go through. We can have therapists, a lot of things are going on, researches are on, and there are a lot of people who are there to help you these days. But at that time कुछ पता नहीं था. But
fortunately we moved to Delhi and we got a therapist, and somehow we started learning about autism. uh, in neurotypicals, what happens, they learn things by the environment, they automatically catch up things. But in autism you have to teach each and everything, even it's sitting, eating, मतलब हर एक चीज आपको सिखानी पड़ती है. Unless and until अगर आप उस चीज को सिखाते नहीं हो तो child is not going to learn that thing. So that is the most difficult part, बिकॉज ये सारी जो नेचुरल चीजें एक बच्चे में इनबॉर्न आती हैं वो सारी चीजें भी एब्सेंट है due to the different wiring in the brain, due to the neurological disorder which happens due to the autism spectrum disorder. And every child is different. Like some may be very vocal, some may be not very vocal, some are very good in social skills, but mostly in the autism they are not very good in the social skills. But कहीं ना कहीं हर बच्चा different होता है, तो according to the child आपको सारी चीजें प्लान आउट करके काम करना पड़ता है. So lot of difficulties were there. Apart from the family part, I felt कि now it's my responsibility to go through whatever had happened. और अगर बच्चे को आगे सिखाना है तो मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा. तो I started learning by myself to how to teach Devansh, and then I came into this field, and now I'm working along with the parents and the children and guiding them and counseling and taking therapies and sessions along with them to help them with my experience, with my knowledge, whatever I have, and almost 13 years of experience now in this field of autism. So a lot of things parents can relate to that, how many difficulties they face, specifically when it comes to expressive language, because most of the kids are non-verbal. Even if they are verbal, they are very like बहुत ही limited conversation होता है, बहुत ही repetitive conversations होता है. So to understand कि वो actually में क्या कहना चाह रहे हैं, sometimes it's get difficult. Like एक ही चीज से रिलेटेड किसी चीज को उन्होंने पिक कर लिया और उसी चीज को, मतलब एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स. तो ये प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के साथ बिहेवियर को ट्रैक डाउन करना, क्योंकि अगर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है, सो द वे दे कन्वे इज इनिशियली इज द बिहेवियर. So sometimes the behaviors are appropriate and sometimes the behaviors are not so much appropriate. It's not socially acceptable to the society, or it's not understandable by the people who are around. So ये सारी चीजें आपको सिखानी पड़ती हैं बच्चों को, how to communicate in a way so that people around them who starts understanding what you want to convey. Even in the compliance is a very big part कि कुछ कहा जा रहा है आपको तो you have to follow through. Like in the neurotypicals or as a big adults we know कि हाँ we have to do these things, क्योंकि ये कहीं ना कहीं eventually we are going to have a good result. But with these kids, cause and effect works a lot. So why we follow your instructions? So वो compliance, वो contingency आपको develop करनी पड़ती है with the trials, with the repetitive and consistent trial. And it's not like कि आपने एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया. You have to work along with the child every day, at least 4 to 5 hours. You have to give that kind of consistency of work with the understanding. Then you will see the improvement in the child, and then the things moves forward. And eventually, when the child progresses, it's a big reinforcer for a parent, because you put so much of effort and you see the small things are moving ahead. So it's a kind of satisfaction for a parent and for the people who are working along with the kids कि वो जो फीलिंग आती है ना, जो छोटे छोटे मूव्स बच्चे लेते हैं. हाँ वी नो कि हमें बहुत देना पड़ता है, हम 100% देते हैं तो शायद 2% हमें रिजल्ट मिलता है. बट वो भी जो 2% हमें मिलता है, दैट इज वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर अ पेरेंट एंड फॉर द केयर गिवर एंड द थेरेपिस्ट, क्योंकि we know whatever we are doing, it's going to help the child and help the family too. Okay. So coming up to the next question, how to find strength?
I think for the strength, you have to keep exploring. You have to do the trials and errors with the child, because since initially it's very difficult to find the strength. बट हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, जैसे हर इंडिविजुअल, नॉट अबाउट बच्चा, हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ ना कुछ वीकनेस होता है. So instead of focusing on the weakness or the area they are lacking, if we start improving the areas in which the child is good, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो पाते हैं कि ओके वी कैन गो फॉर दिस और गो फॉर दिस, और साइंस आपको मिलने लगते हैं कि हमें किस एरिया में या किस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करना है. बट फॉर दैट यू हैव टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग. एंड इनिशियली हो सकता है कि लाइक जैसे अभी देवांश का अभी सिंगिंग में है, बट इनिशियली हो सकता है कि वो पैशन या वो इंटरेस्ट ना हो बच्चे में. सो जब आप एक्सपोज करते हो तो आपको वो ट्रायल एंड एरर काफी दिनों तक देना पड़ता है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द चाइल्ड शोज इंटरेस्ट एंड डेवलप्स इंटरेस्ट इन दैट थिंग, आप उसको एज ए स्ट्रेंथ आगे लेकर नहीं जा सकते हो. तो बहुत सारी चीजें, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी के एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, some children are very good in computer. So you have to keep explore each and everything before going to decide कि हाँ हम किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं. और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे 3-4 एरियाज में आपको स्ट्रेंथ शो करें, सो वी कैन गो फॉर दैट आल्सो, बिकॉज लाइक वी आल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक फ्री टाइम एक्टिविटी में कभी गाने सुन रहे हैं, कभी गाने गा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. सो वी आर नॉट restricted ourselves to a limited or to a one field. So in that, the same applies with the children with autism spectrum disorder too. So they can go in 2-3 fields or many fields as per their interest, as far as they can go. बट हाँ, उनके लिए हमें वो जो असिस्टेंस लगती है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट टू नर्चर दैट स्ट्रेंथ और नर्चर दैट talent in the child. We have to provide that, because इतनी सारी एरियाज में कहीं ना कहीं जो लूप एंड होल्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बच्चों को. तो लाइक जैसे अगर हम कहें ना कि एक फ्लावर को भी ग्रो करने के लिए वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, खाद पानी और वो नरिशमेंट आपको देना पड़ता है. सो in the same way, the flower is not asking anything, it's your expectation कि ये फूल अच्छे से खिले. It looks like a beautiful garden in my house. So in that same way, without expecting anything, the child will initiate that or child will do, then I'm going to do that. You have to give that environment, you have to get that kind of nurturing exposure to the child, so that he can अपने आप को वो उतना फ्लोरिश कर सके, वो उतना नर्चर हो पाए कि हम किसी भी गोल पे जाके डिसाइड कर पाए कि हाँ ये दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड. सो इट शुड नॉट बी लिमिटेड. you should have to keep trial, and you should have to be the consistent. See, consistency is the key, and it's a crucial when it comes to anything, and specifically when we are talking about the autism. So consistency is the crucial key for moving things forward. Okay. So our last question is, how do you see the world when it comes to disability like autism? About world, a lot of changes had happened in the world, and the awareness is happening. I must say, like 10 years ago and now, the people are accepting and taking the children is very different. When we came to know about autism, तो initially तो हमें ये भी सुनना पड़ा था कि ओ ये तो पागल है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला है, a lot of things. But it's like ना कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो, because I will never focus about what people are saying, what society are saying. So I was like कि okay, this is the thing that I have got and I have to do something. कि कुछ जो भी मिला है आप इसको कैसे beautiful या beautify कर सकते हो. That is my job. So मैं कभी भी बॉदर नहीं हुई कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, कभी नहीं. That's a good thing. But many of the people, हाँ वो उनको फर्क पड़ जाता है. But I will say to the parents definitely कि
इन सब चीजों को आप ध्यान ना दें, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे, unless and until it's going to help the children to progress. आपके लिए बाकी सारी चीजें मैटर नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि अल्टीमेट गोल इज कि हमें अपने बच्चे को प्रोग्रेस करना है, तो बच्चे को प्रोग्रेस करने के लिए भी जो भी चीज चाहिए, so you have to be mentally strong for that, especially for the parents, especially the mothers, because in India, if we talk about in India, the bread and butter is the responsibility of the father. So mother is the person who take care of the child. He is always there along with the child. Even if she is working, she has more responsibility as compared to the father. So जो पेयरिंग होती है, जो बॉन्ड होता है of mother with the child is the strongest bond in the world. What I feel, I'm not getting judgmental, but it's true somehow. और अगर हम ये सोचने लगे कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा बच्चा प्रोग्रेस करे rather than what people are saying, तो कहीं ना कहीं आप समझ पाते हो, आप अपने अंदर ढूंढ पाते हो अपने स्ट्रेंथ को कि हाँ वी कैन डू दैट. और जब वर्ल्ड की बात आती है तो अब तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, लाइक इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अब स्कूल्स में भी स्पेशल एजुकेटर्स कंपलसरी हो गए हैं, मॉडिफिकेशन इन द सिलेबस एंड व्हाटएवर द थिंग्स मटेरियल्स आर कमिंग. सो उनके भी जो अप्रोच है इज लाइक मल्टी सेंसरी अप्रोच पे अब टीचिंग हो रही है बहुत सारे स्कूल्स में. दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड समहाउ इट्स एडिंग द प्रोग्रेस टू अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन. और कहीं ना कहीं होप एंड फेथ तो आता ही आता है. इक्विटी मेरे हिसाब से, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्विटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज किसी बच्चे की नीड ज्यादा हो सकती है, किसी बच्चे की नीड कम हो सकती है. तो एज पर द नीड उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो अब पॉलिसीज में तो आ गया है. somehow it started somewhere too, like if you go to the therapy centers in some schools, in international schools, or some schools which are actually aware about and taking the children, but not in everywhere. But कहीं ना कहीं जब ये start हुआ है तो eventually it's going to be fall in the place too. It's more about I think people get aware. अगर लोग अवेयर होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए डिफिकल्टी, बिकॉज अगर आप देखो ना, अगर एक सर्कल हो उसमें सिर्फ व्हाइट 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 पूरे डॉट्स बने होंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल. इवन इफ यू गो टू अ गार्डन देयर इज ओनली व्हाइट फ्लावर्स, it won't look so beautiful. But if there are a lot of flowers with different colors, with different fragrance, different textures, तो उस वो जो सुंदरता होती है ना वो अलग ही होती है. तो वर्ल्ड इज लाइक दैट. तो हर बच्चे डिफरेंट होते हैं, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है. तो जब आप इस तरह से चीजों को देखते हो ना विदाउट कंपैरिजन, तो कहीं ना कहीं दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, हर चीज जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है. तो समहाउ अगर हम ये सोचे कि नहीं ये सिर्फ एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टेड ऑफ अगर फैमिलीज आगे आए, पेरेंट्स आगे आए, दे स्टार्ट कन्वे and they start creating awareness even like in the society, in the colonies, so it will add up to the awareness and it's going to lead the like world like a family. It should not be limited to a family कि ये सिर्फ इसी की responsibility है. It's not about always the finances and the thing, it's more about the moral support. Sometimes we need like if I am feeling down, I'm not feeling good, so there is someone from the neighborhood who comes and gives support, mentally support. So in that way the nourishment happen. Like जैसे जैसे अगर पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं, अगर हम अगर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ाएगी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेरेंट्स इस चीज को एज ए एक्सेप्टेंस लेके चले कि इट्स नॉट अबाउट द डिसेबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट द लैकनेस, इट्स नॉट अबाउट द लिमिटेड थिंग्स दैट our kids are having. It's more about we are family and it's about inclusion कि चारों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है. सो व्हाट, हम सब मिलके ही एक हाथ बनते हैं, और जब हमारी मुट्ठी बनती है तो हमें सारे फिंगर्स की जरूरत पड़ती है. ऐसा नहीं कि अगर पिंकी फिंगर्स छोटा है तो उसका कोई रोल नहीं है. हाँ, उसका उतना रोल नहीं है, बट हाँ इसका रोल तो है. सो एक फैमिली की तरह अगर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत जरूरी है.
और अवेयरनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्सेप्टेंस आना चाहिए, और एक्सेप्टेंस को क्रिएट करने के लिए आई विल से हमें इनिशिएट करना पड़ेगा एज ए रोल मॉडल, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, हमें वो चीज खुद करके दिखानी पड़ेगी। जो हम खुद करके दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए रोल मॉडल सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है और चीजें आगे बढ़ती हैं, थिंग्स लाइक गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? So I see it's like it's not more about disability, it's more about the awareness, because numbers तो बढ़ ही रहे हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि अगर कोई बहुत फाइनेंशियली गुड पोजीशन में है तो उसके यहाँ कोई डिसेबल्ड बच्चा नहीं होता है। it can happen randomly to anyone's house, किसी के घर में भी हो सकता है। आज तक हमारी फैमिली में नहीं हुआ है, so what, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए। So we should be open about the things. It should not be labelized with the किसी रेस के साथ या किसी पर्टिकुलर थिंग्स के साथ। it can happen with anyone, in any family, in any society. So and we all are human beings. The most important thing is that कि disability हो या ना हो, we all are human beings, we all are having feelings, हम convey कर पाए या ना कर पाए, हम express कर सके या ना कर सके, but they feel in the same way that we feel, that other people feels. So we should respect, we should give that freedom to them also, and provide that nurturing environment to move along, not left, not making them left behind. साथ चलते हैं तो आगे साथ से मिलकर बढ़ते हैं। Okay. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful musical event by Devansh also. And I thank you also for sharing your experience and for joining us on a very short moment. Yeah, thank you. It's a wonderful thing to create an awareness, because I think it's really needed for the people. So can we do one more song for Devansh? Yes, sure, ma'am. No issues. Okay, so just give me a second. I will bring him back. Yes. So I'm putting myself on the mute, okay? Yes. झूठा गिरान बसेरा, साचा दर्द मेरा। उठा Just a second.
साचा दर्द मेरा मृग तिशला सावा पिया नाता मेरा तेरा नाना जो साँझे ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के बीजते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली ये कसम मिलके चलेंगे हर दम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना तुम बंद हो गए हैं यूं। सांस हैरान है मन परेशान है हो रही थी आशा ये मेरी जान है ये निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवाल का उठा सा दिल में तूफान है नैना के आसमान के सितारे नैना मैं आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना शहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। खुदा ये करो जिन्होंने ली ये कसम मिलके चलेंगे हर दम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना सजा के ख्वाब देखते थे लैला बिछड़ के आज रो दिए थैंक यू Yeah. Mm. So, thank Wonderful you, song, Autism. ma'am. Yeah, somehow the speaker got disconnected and Okay, didn't no find what. issues. Really, we enjoyed this session a lot. Once again, thank you so much for sharing the event with us. Yeah, thank you so much and hope to see you soon. Yes, ma'am. Okay, bye.